territory of maps, like overlapping territories in the maps. In तीनों का you will find overlapping territories. Overlapping territories. क्यों? What was the reason? The reason was that all of these were fighting against each other all the time. है ना? So basically they were fighting like amongst each other for all the time, and the most important reason for the fight was Kannauj. सबसे बड़ा रीजन था कन्नौज. कन्नौज के लिए लड़ रहे थे. तो कन्नौज के लिए क्यों एक शहर के लिए सब लोग पागल थे? तो जानवी बोलना चाहते हैं रिसोर्स. तो सीरियसली रिसोर्स. And if resource, so only resource. What was that important thing because of which all of the three dynasties wanted Kannauj? तीनों को कन्नौज क्यों चाहिए था? Yes. हाँ जी अभिनय. Sir, I think so because Kannauj had become a very important city under Harshvardhan, and after the Vardhan dynasty, I think so, sir, it became a very influential place and a city of importance. So therefore, everyone was like, if we rule Kannauj, we basically will have a control of around all that area, sir. Okay, तो ये एक बहुत important reason था. बिल्कुल well said अभिनय. During the time of Harsha, Kannauj became like it was understood. So whosoever is controlling Kannauj is the sovereign power. Are you getting this? जिसके पास भी कन्नौज है, that dynasty, that ruler will be as like sovereign. वो sovereign हो जाएगा. What do you mean by when we say sovereign? Sovereignty क्या होता है? Can't you unmute and tell me what is sovereign? Supreme power, like no dependency on others. Supreme power. Okay, no dependency on others. So basically, if like, is India sovereign? Yes, sir. India sovereign है? पक्का? Yes. बिल्कुल सही बात है. India is a sovereign country. So sovereign का मतलब our foreign policy is not guided by anyone else. है ना? No influence of any other nation on our foreign policy. अपनी foreign policy हम अपने हिसाब से चला सकते हैं. That is sovereignty. So Kannauj, it was considered whosoever rules Kannauj will be supreme. It became a prestige issue. In addition to this, there were several other reasons as well. Now, the other reasons why everyone wanted Kannauj. Number one, पहला रीजन था कन्नौज एक ऐसी जगह पर लोकेटेड थी, like जो सिटी कन्नौज है, the city Kannauj, it was located in such a region, you can say in Gangetic Plains. In Gangetic Plains में Kannauj was situated. When Kannauj is situated in Gangetic Plains, that means the region is having rich alluvial soils. The region is having rich alluvial soils. When the region is having rich alluvial soils, it means what? The region is having very developed agriculture. When the region is having very developed agriculture, it means what? The region is having more taxes. And whosoever, like everyone wants to have more taxes, don't you think so? हर किसी को ज़्यादा taxes चाहिए. अभी भी देख लो आप, everything is under GST, है ना? Everything is under GST, but not petrol and diesel. Have you thought this? Like why we are paying so much of taxes on petrol, diesel, and what is the taxes? Like how much percentage of taxes we are paying on petrol and diesel? I guess मैंने आपको बात पहले भी बताई थी एक दिन. Nepal is a country like which is importing oil from us, and still the prices of oil are less in Nepal. है ना? ऑलरेडी एक बार हमने डिस्कस किया था एक बार क्लास के अंदर. और बिहार से और काफी जगहों से, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश से लोग स्मगलिंग करते हैं नेपाल से ऑयल की. सो एक आयरनी है ये, है ना? इट्स एन आयरनी बेसिकली. हमसे ही लेके और हमसे सस्ता, और हम फिर हमारे लोग जाके वहां से स्मगल करके लेके आ रहे हैं. because that we have levied huge number of taxes. इतना taxes है ना पेट्रोल और डीजल के ऊपर. कभी अगर टाइम मिले तो पढ़ के देखना, एक बार देखना कि 100 रुपीज पर लीटर जो पेट्रोल चल रहा है उसके ऊपर एक्चुअल प्राइस कितना है पेट्रोल का और टैक्सेस कितना है ना? तो तब हमें पता चलेगा कि जीएसटी जब हम करते रहते हैं कि जीएसटी इतना अच्छा उतना अच्छा, तो लाइक तब आपको पता चलेगा कि हमने जीएसटी क्यों इसके ऊपर नहीं लेकर आया.
अगर जीएसटी का हम सबसे ज्यादा स्लैब भी इसमें डाल देंगे, है ना, 18% का भी डाल देंगे, तो पेट्रोल हाफ द प्राइस हो जाएगा. आर यू गेटिंग दिस? द सेम गोज फॉर अल्कोहल. द सेम गोज फॉर अल्कोहल. अल्कोहल को भी हमने जीएसटी से बाहर रखा हुआ है. तो सब अपना अपना फायदा, है ना. सरकार को जहां पे अपना फायदा चाहिए तो वहां उसको जीएसटी में नहीं लेकर आया. एक और चीज, यू वुड हैव ऑब्जर्व्ड व्हेन वी वर हैविंग लॉकडाउन्स, हैव यू ऑब्जर्व्ड दैट सब कुछ बंद है लेकिन अल्कोहल शॉप्स खुले हुए हैं. हैव यू ऑब्जर्व्ड दिस थिंग? Everything was closed except the alcohol shops. Why? Because it is the alcohol shops from where we'll generate revenue. है ना? It's the alcohol shop from where we'll generate revenue. कितना revenue आएगा यहाँ से? Basically, sometimes the government also becomes businessman, you know, or a business organization, you know, because it also thinks to maximize its revenues. जैसा private entities या फिर जैसा private companies like East India Company thought. Every time East India Company was working to maximize its revenues. इतना तो आपको सबको पता है. It was its primary motive. The primary motive of East India Company was to increase its revenue. At present जितनी भी private companies हैं, हर किसी का काम है to increase its revenue. है ना, ज्यादा से ज्यादा profit चाहिए. But there is a sentence: the business of the government is not to do business. The business of the government is not to do business. The business of the government is to make conditions conducive for business. To make conditions conducive for business. है ना ये, और इसीलिए present government, I guess, it is disinvesting more and more. है ना, ये बात गवर्नमेंट को भी पता है, इसीलिए गवर्नमेंट is disinvesting more and more. है ना, but in addition to this, there is one more work for the government, and that is welfare. सब कुछ याद रहता है, हम ये भूल जाते हैं welfare. है ना, वेलफेयर भूल जाता है. एवरीवन मस्ट बी अवेयर दैट बगैर कहे the subsidy on the kitchen gas cylinders is gone. Do you know this thing? Now people are not receiving the subsidies on the cylinders, gas cylinders. Do you know this or not? Are you aware? Yes, are you aware of this? Not aware. The subsidies, try to ask someone who was receiving those subsidies, or if your family was receiving, or any relative or पड़ोसी किसी को अगर मिल रहा था तो पूछ के देखना कब से सब्सिडी नहीं मिला है. Try to ask what happened, you know, what happened to that subsidy. So in this backdrop we launch Ujjwala 2. In this backdrop we launch Ujjwala 2. Ujjwala 1 के लोग सिलेंडर नहीं भरा पा रहे हैं, है ना. Ujjwala 1 के लोग सिलेंडर नहीं भरा पा रहे हैं. पिछले दिसंबर से इस अगस्त तक लगभग 50% का प्राइस एडिशन हो गया. 50% से ज्यादा, डबल सिलेंडर हो गया, है ना. तो नाउ Ujjwala 2 has been launched, but I guess till the time people are not having money to refill those cylinders, like these schemes will be more on paper and like less practical. थोड़ा सा हमें चेंज करने की जरूरत है ना. वी रिक्वायर सर्टेन चेंज, एंड आई गेस लाइक इट्स द वर्क ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर्स कि वी मस्ट गिव आवर सजेशंस टू द गवर्नमेंट कि कहाँ पर कौन सी चीज बेटर हो सकती है. सो बेटर एक ये हो सकती है, हम उज्ज्वला के अंदर एटलीस्ट लाइक द पीपल हु आर बीपीएल, दे मस्ट बी गेटिंग दोस सब्सिडीज, है ना. वो सब्सिडीज कंटिन्यू रहना चाहिए उन लोगों के लिए. कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि वो लोग भरा पा रहे हैं, बिकॉज आफ्टर दिस कोरोना स्केयर सो मेनी पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब्स, है ना. अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना ज्यादा है सबको पता है. सो पीपल आर नॉट हैविंग मनी टू रिफिल दोस सिलेंडर्स. Okay, so this was one thing, rich agriculture, rich region. The another thing is the hinterland of Kannauj. The hinterland of Kannauj is also having rich minerals. ये भी है एक rich minerals. Shubhra, I wanted to talk to you actually. Shubhra, can you unmute please? Shubhra, not audible. Yes, Shubhra. Audible, sir? Yes, you are audible. Shubhra, आपने जो मैंने आपको बोला था, you need to analyze the paper, है ना, and आपने पेपर का एनालिसिस किया है. शुभ्रा, आपने मतलब इतना हार्ड वर्क किया, but there is something that I wanted to like suggest and give advice to you. See, Shubhra, there are two types of work. One is called as hard work, and there is something which is called as smart work. I always believe that
we must go for smart work, Shubhra. ठीक है शुभ्रा, Yes. what you have done is really very hard work, है ना. मुझे नहीं पता आपको कितना Yes, टाइम sir. लगा होगा उसको करने में, लेकिन अगर यही काम मैं करता मेरे हिसाब से आई वुड हैव टेकन 2 days एटलीस्ट. मुझे नहीं पता Yes, आपको sir. कितना टाइम लगा शुभ्रा, है ना. बट वी डोंट हैव सो मच ऑफ टाइम शुभ्रा. ओके, तो शुभ्रा Yes, यू नीड टू डू स्मार्ट वर्क. अब ये आप स्मार्टली कैसे कर सकते थे, हाउ यू कैन डू इट, स्टिल यू कैन डू इट फॉर other years क्वेश्चन पेपर्स एज वेल. आप कैसे कर सकते Yes, हो, sir. आपको क्या करना है, कोई सा भी आपने लाइक ईयर आपने 2000 लेट्स से 2020 का ही पेपर उठा लिया आपने, है ना. आप पेपर पे हाथ से मत लिखो क्वेश्चन. ओ माय गॉड, मुझे समझ नहीं आ रहा इतना कितना मुश्किल काम करा है आपने. लाइक आपके तो हाथ दुख गए होंगे इतना लिखने के बाद, पूरा पेपर लिखने के बाद में. Shubhra, what you can do is you are having two options. One option is you can get the printout of these papers and उसके ऊपर आप ये काम कर लो. उसके ऊपर आप ये काम कैसे करोगे कि if this is the question, these are the options. तो यहाँ पर साइड में there is lot of space. तो सबसे पहले तो यहाँ पर साइड में लिखो the question belongs to let's say environment. Question belongs to environment. Yes, The sir. question belongs to this topic. टॉपिक है किस टॉपिक के ऊपर है ना. लेट्स से लाइक पेरिस डील, है ना. इसके ऊपर ये क्वेश्चन, ये यहाँ से एक क्वेश्चन आया एनवायरमेंट. अगला क्वेश्चन और आप जहां से भी क्वेश्चन आया है, वेर एवर यू विल फाइंड द करेक्ट आंसर टू इट, जहां पर भी आपको इसका करेक्ट आंसर मिलेगा ना, यहाँ लिख दो, उस सोर्स का नाम लिख दो. लेट्स से यू विल गेट दिस आंसर फ्रॉम दैट बुक एनवायरमेंटल स्टडीज बाय आईसीएससी बोर्ड, है ना. एनवायरमेंटल स्टडीज क्लास 9th आईसीएससी बोर्ड, इसमें इसका आंसर दिया हुआ है. राइट द पेज नंबर एज वेल. पेज नंबर यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है. यू नीड टू रीड दैट. ओके, ऐसी क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 लाइक फॉर ऑल ऑफ दिस पेपर. अदरवाइज द सेकंड ऑप्शन जो मेरे ख्याल से विच इज मोर स्मार्ट, जो ज्यादा स्मार्ट है, वो ऑप्शन क्या है. व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डाउनलोड दैट एडोब रीडर. सबसे पहले एडोब रीडर डाउनलोड करो. अगर नहीं है तो आई होप यू आर हैविंग लैपटॉप और अ कंप्यूटर, है ना. अगर आपके पास एक लैपटॉप और कंप्यूटर है, ट्राई टू डाउनलोड दैट पेपर एंड ओपन इट विद एडोब रीडर. और एडोब रीडर में जाओ. एडोब रीडर में यू कैन मेक लाइक यू कैन यूज पेन आल्सो. आपको पता है ये बात, आप पेन यूज कर सकते हो उसके ऊपर. आप टाइपिंग भी यूज कर सकते हो, है ना. सो आपको प्रिंट निकालने की भी जरूरत नहीं होगी. जो आपने देखा जब आप लोग मुझे क्वेश्चन पेपर देते हो, मैं कैसे पेपर चेक करके भेजता हूँ. सो यू कैन यूज दैट. इफ यू कैन यूज डिजिटल पेन और यू कैन यूज लाइक यू कैन टाइप आल्सो. बॉक्स साइड में आएगा, यू कैन यूज बॉक्स एंड बॉक्सेस में यहाँ पे साइड में लिख लो whatever information you want to have. Like if this is the question is from environment, you can make one box here. And second thing like जहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पर है, you can make another box here कि this is the topic. Also you can write explanation here as well here, या फिर वो बॉक्स कहीं पर भी आप उसको फिक्स कर सकते हो, है ना. that box can be fixed anywhere. तो वो बॉक्स कहीं पे भी इंक्लूड कर लो. आपको डिजिटल पेन की भी जरूरत नहीं है. आप अपना कीबोर्ड यूज करके ही उसमें यू कैन टाइप द इंफॉर्मेशन. तो आप यू विल बी हैविंग द सॉफ्ट कॉपी ऑफ दिस. आपके पास एक पीडीएफ होगा इसका, है ना. यू विल बी हैविंग सम पीडीएफ, so you can use those PDFs. But the thing that you are doing, like it's really very hard to do it, and you cannot do it for 10 years. Seriously, you cannot do it for 10 years. Yes, sir. मैं मानता हूँ कि इसका फायदा बहुत ज्यादा है ना. मैं बिल्कुल मानता हूँ इसका फायदा बहुत ज्यादा, बट इनपुट आउटपुट रेशियो इज टू लो. Getting this thing? Yes, sir. Input output ratio is too low. So please don't do it this way. Yes. Change the way. ठीक है शुभ्रा. And try to see after the end of the paper, 100 questions के बाद में just check like how many questions from each subject. किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आए हैं, ये भी वहां पर ऐसे बॉक्स डाल के उसमें लिख देना. अदरवाइज एक अपनी डायरी में या किसी जगह पे आप लिख सकते हो 2000. आप एनालाइज कर सकते हो 2015 2016. एक टेबल बनाना कि अच्छा हिस्ट्री एंशिएंट से इस साल में इतने समथिंग लाइक दैट. मिडिवल से इतने. एंड इफ यू कैन राइट द टॉपिक नेम. अगर यहाँ पे टॉपिक का नाम भी लिख पाओ, ठीक है. अगर आप टॉपिक का नाम भी लिख पाओ तो थोड़ा सा और ज्यादा बेटर होगा. उससे क्या है ना, जब आप रिवाइज करोगे तो आप
को पता होगा which are the areas which UPSC considers as important and which are the areas which are relatively less important. ठीक है शुभ्रा? I hope you understood my point. Okay, and some of you have sent me some answers. I was not able to check the answers like due to like that festival and all, festive season tha, Saturday, Sunday. So there were so many guests at my place, so I could not check those answers. But जैसे मुझे time मिलेगा, like very soon, Anvi and Shubhra, please don't think because I guess some of the answers are not related to history as well. So I'll be going through them. Okay, Janvi and Shubhra especially, but I'll take some time. So you need to give me some time. Okay. Sir, please repeat. Shubhra, कौन सा वाला? अभी जो मैंने बोला, I'll take some time to check your answers, Shubhra. Okay, sir. So can we both send to you all the answers? हाँ, you can send me, but don't expect me कि मैं आज आप मुझे भेजोगे मैं आज ही check कर दूँगा. It will be I'll be taking some time. Yeah. Okay. Yes, okay. Sure, sir. Also, the answers I haven't received yet. IBC वाला मुझे तो पता ही नहीं आपका आंसर कौन से संसार के गर्भ में जा चुका है. कौन से मंदिर की गर्भगृह में. ये भी मुझे नहीं पता है कहाँ क्या हुआ, क्यों नहीं मिला. एक बार शुभ्रा मुझे दोबारा से चेक करना पड़ेगा कि बिकॉज मेरी फाइल में इतने सारे आंसर्स हैं, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड योर आंसर नाउ. तो मुझे दोबारा चेक करना पड़ेगा, है ना. तो आप मुझे दोबारा से सेंड करना, मैं दोबारा से उसको चेक करूंगा. ठीक है. Okay, so I was saying this region where this city is located, Kannauj is located, the hinterland of this city is mineral rich. The hinterland, what do you mean by hinterland? Hinterland का मतलब क्या होता है? The word hinterland is generally used for a port, है ना. Generally the word hinterland is used for a port, P-O-R-T, port. जो sea port होता है, harbor port, उसके लिए generally हम hinterland word use करते हैं. And इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है the places from where the जो exports जाने हैं, the things which are going out, तो वो कहाँ से collect किए गए हैं, and the imports will be reached to which places. इसका ये मतलब होता है. But here hinterland means the vicinity. ज्यादा दूर नहीं, पास में ही आपको मिनरल्स भी मिल जाएंगे. सो ये भी इंपॉर्टेंट है ना. ये भी इंपॉर्टेंट है. एक और चीज हो गई थी कि इट वाज अंडरस्टूड whosoever will rule Kannauj, whosoever will be having the control over Kannauj, it will be easy for that ruler to have control on Gujarat coast. Control over Gujarat coast. और अगर गुजरात कोस्ट मिल जाएगा तो ड्यू लाइक एट दैट टाइम लाइक एक तो ट्रेड तो हमें पता ही है, बट ट्रेड किसके साथ, ट्रेडिंग किसके साथ में? एट दैट टाइम इट वाज द अरब कंट्रीज that were doing international trade. So whosoever is having Kannauj, it was understood the ruler can have Gujarat coast as well. और अगर गुजरात कोस्ट मिल जाएगा तो हमें ट्रेडिंग ही मिल जाएगी. So we can also trade with the Arab countries. एक और रीजन थोड़ा सा अजीब सा रीजन है, but the reason is like if two kingdoms are fighting against each other, दो लोग हैं आपस में लड़ रहे हैं, so दोनों में like क्या होगा? Most of the time like एक जीतेगा एक हारेगा, है ना. If the match is not tied, so एक जीतेगा एक हारेगा. The ruler who is like being defeated, so that ruler will be giving something called as war booty. ठीक है सर, that ruler will be giving something war booty. The defeated person will be paying the war indemnity. This is the war indemnity, है ना. war indemnity है ये. This is the war indemnity that will be given. War indemnity that will be given to the person who has won the war. Okay, so that was called as war booty. इसको क्या बोलते थे? war booty बोलते थे. तो जितने ज्यादा हम लड़ाई जीतेंगे उतना ज्यादा war booty मिलेगा, and we'll become more richer. We will become more richer. So this was also one of the reason why all these like people, why these three dynasties
were fighting like anything for Kannauj, and this fight is called as tripartite struggle, or it is also called as Kannauj triangle. ठीक है, दो चीजें, दो वर्ड हम इसके लिए यूज करते हैं, either it is called as Kannauj triangle, or it is also called as tripartite struggle. Tripartite struggle. It is also called as tripartite struggle or Kannauj triangle. Both are the same thing. Please don't get confused between tripartite treaty. आपने एक tripartite treaty भी पढ़ा होगा मॉडर्न इंडिया में. I guess शायद आपने पढ़ा होगा tripartite treaty जब आपने रंजीत सिंह पढ़ा होगा, है ना. रंजीत सिंह याद है किसी को? रंजीत सिंह, शाह Shuja, and the third was East India Company. Ranjit Singh, Shah Shuja, and East India Company. This man wanted to be the king of Afghanistan. This man wanted to be the king of Afghanistan. Shah Shuja, तो उसके लिए Shah Shuja took help of EIC, and EIC ने बोला रंजीत सिंह को, you also provide help to Shah Shuja. तो तीनों के बीच में, yes कांची, तीनों के बीच में एक ट्रीटी हुई थी. The treaty is called as tripartite treaty. और इसी टाइम पे शाह शुजा ने कोहिनूर भी दिया था रंजीत सिंह को. इट वॉज दिस टाइम व्हेन शाह शुजा गेव कोहिनूर टू रंजीत सिंह. मैंने ये स्टोरी बता रखी है वैसे आपको, है ना. लेकिन बाद में हुआ कुछ और ही था, कुछ और ही हो गया था जब एंग्लो अफगान वॉर हुए थे, है ना. तो ये कभी और डिस्कस करेंगे. सिंध जब मैं आपको बताऊंगा ना एनेक्सेशन ऑफ सिंध, उस टाइम पे बताऊंगा कि एक्चुअली हुआ क्या था. इसके चक्कर में सिंध को एनेक्स कर लिया था ब्रिटिश ने, ठीक है. बिकॉज ऑफ दिस ब्रिटिश हैड एनेक्स्ड सिंध एंड शाह शुजा वाज किल्ड. ओके, चलो तो आगे चलते हैं. सो अब चलते हैं ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में द फर्स्ट वर्टेक्स इज राष्ट्रकूटास. आई होप यू रिमेंबर दैट मैप. आपको मैप याद है? 1, 2 and 3 समथिंग कुछ ऐसा मैप था, है ना. दिस वाज दैट ओवरलैपिंग टेरिटरी. एंड लाइक समवेयर हियर कन्नौज लाइड, है ना. यहाँ पे कहीं पे कन्नौज वाज लोकेटेड. सो एक एक करके तीनों को देखते हैं. फर्स्ट इज राष्ट्रकूटास. नाउ राष्ट्रकूटास के ओरिजिन के लिए if we like discuss about the origin of Rashtrakutas, so there is a controversy. Like people are not very sure कि ये लोग कहाँ से आ गए, है ना. But still some people say that these people were feudatories of Chalukyas. ये चालुक्यास के feudatories थे. कौन से चालुक्यास के? They were feudatories of Chalukyas of Badami. Remember Chalukyas of Badami, Chalukyas of Venji, and Chalukyas of Kalyani. I hope आपको याद होगा तीनों Chalukyas, and also remember their areas. सब याद है? Chalukyas of Kalyani कहाँ से आ गए थे? Kanchi and mute and tell me, Chalukyas of Kalyani कौन थे? Who were Chalukyas of Kalyani? Sir, Chalukyas of Kalyani were the descendants of Chalukyas of Badami. Okay, और उनका टाइम पीरियड था? Sir, the time period was 10th century to 12th century. बहुत बढ़िया, 10th century to 12th century. तो जो राष्ट्रकूटास हैं, they are considered to be the feudatories of Chalukyas of Badami. And what was the name of the ruler, Chalukyan ruler, who was defeated by one person and then he established Rashtrakuta dynasty? What was the name of the Chalukyan ruler and what was the name of that person who started Rashtrakuta dynasty? 2 names I want. Sindhuja. Yes, Professor. Yes, Sindhuja, what was the name of the Chalukyan ruler that was defeated by one person who started Rashtrakuta dynasty? Was it Kirtivarman II? He was defeated by Dante Durga. Very good, बहुत बढ़िया. So Kirtivarman II was defeated by Danti Durga, and Danti Durga established Rashtrakuta dynasty. Their capital was
capital was Malkhed. Malkhed. It is also called as Manyakheda. Manyakheda. प्रेजेंट डे कर्नाटका में ये जगह पड़ती है, कर्नाटका में मलखेद और मान्यखेड़ा. इन द ट्राइपेटाइट स्ट्रगल, है ना, ट्राइपेटाइट स्ट्रगल मैंने आपको क्या बताया था, ऑल थ्री वर फाइटिंग अमंगस्ट ईच अदर. समटाइम राष्ट्रकूटास विद पालास, समटाइम पालास विद प्रतिहारास एंड समटाइम प्रतिहारास विद राष्ट्रकूटास. इन दोज स्ट्रगल, in most of the time it was Rashtrakutas who defeated Palas and Pratiharas. मैंने बोला most of the time, इसका मतलब ये नहीं है every time they were defeating. बट अगर किसी को आप सारा बैटल्स देख के किसी को रैंकिंग दो कि सबसे ज्यादा मैचेस किसने जीते, है ना, अकॉर्डिंग टू दिस थिंग कि सबसे ज्यादा मैचेस किसने जीते, सो दे वर राष्ट्रकूटास. राष्ट्रकूटास ने सबसे ज्यादा मैचेस जीते. अब दीज पीपल, मलखेड़ also known as मान्यखेड़ा, MANYAKHEDA, मान्यखेड़ा, है ना, ऐसा लगता है ना, मान्यता दत्ता, है ना, so you can link with her also, मान्यता दत्त. So Malkheda, Manyakheda. So these people, Rashtrakutas, they were having liberal attitude towards Arab traders. Why is Kirti Varman here? अरे हाँ जानवी, कीर्ति वर्मन was चालुक्यन रूलर ना, he was last चालुक्यन रूलर and he was defeated by दंती दुर्गा. ये वाली बात मैंने आपको पहले ही बताई थी, he was defeated by दंती दुर्गा. Okay, yes जानवी, yes. So कीर्ति वर्मन was Chalukyan ruler and he was defeated by Danti Durga, and Danti Durga established Rashtrakuta dynasty. Capital इनका आ गया था मलखेड़ and मान्यखेड़ा with चालुक्य बादामी. देखो ये लिखा हुआ बादामी. Okay सबना. So these people had liberal attitude towards Arab traders. They were having liberal attitude towards Arab traders. Now, why I am saying they were having liberal attitude towards Arab traders? Because like these people wanted to do trade with these Arabs, and these people wanted to do trade with these Arabs. अब आज की जैसे कोई है कि people are coming like from morning flight and going back by the evening flight, ऐसे तो नहीं होता था, है ना. Like अभी तो क्या होता है, if you are staying in Mumbai and you want to come to Delhi, you are having some work in Delhi, so what you can do is you can come by a morning flight and then you can like go back. You can go back by the evening flight. So whenever like you will be getting selected and you are in the services, this is the thing that you will be doing a lot. आप बहुत बार ये वाला काम करोगे, है ना, आपको बहुत कहीं पर भी आप पोस्टिंग होगी, आपको दिल्ली बार बार बुलाया जाएगा. सो मेनी मीटिंग्स एंड सो मेनी थिंग्स लाइक दैट. सो हम जनरली यही काम करते हैं, सुबह की फ्लाइट से जाते हैं, शाम की फ्लाइट से वापस आ जाते हैं. बट ड्यूरिंग दैट टाइम the things were quite different. The things were like the Arab traders, like who were coming to India for trading, they need to search best of the materials that they want to take to their country. Are you getting this thing? है ना. अभी अगर मुझे आज अगर मुझे आज जाना है, बिहार जाना है, मृगांक के घर जाना है बिहार में, और मुझे मिथिला पेंटिंग्स तलाशनी है ना, आई वांट टू हैव सम मिथिला पेंटिंग्स. तो मिथिला पेंटिंग तलाशने के लिए अब मैं क्या करूंगा, बिहार पहुंचने के बाद आई विल सर्च विच आर द प्लेसेस वेयर आई विल गेट वेरी नाइस मिथिला पेंटिंग्स, है ना. ओरिजिनल पेंटिंग कहाँ मिलेंगी मिथिला की, बहुत बढ़िया शानदार पेंटिंग्स कहाँ मिलेंगी. सो फॉर दैट I'll have to spend some time in Bihar, in different cities. I need to spend some time. So वो जो मैं time spend करूंगा, the time can be like, it can last for a week to a month, sometimes more than that. By that time, Islam had originated. इस्लाम का जन्म हो चुका है 622 AD में, है ना. इस्लाम का जन्म हो चुका है 622 AD में. Islam has originated by this time. Now, when the people are like they are adhering to a new religion, एक नया religion है जिसके लिए वो adhere कर रहे हैं, and they want to pray. When they want to pray, what is that structure? What is that the place of worship called, where the people belonging to this religion like pray? What is that thing called as? That is called as mosque. Now when these people are coming to India,
So they want to pray, but they don't have any mosque. They don't have any mosque. So now these traders took permission from Rashtrakuta kings, कि सर अगर हम एक काम करें, अगर हम इंडिया के अंदर कुछ मॉस्क्स बना दे तो, if we like construct some mosques, है ना, so that whoever is coming to this place for trading purposes, like we can practice our religion. So this thing was allowed. This thing was allowed by Rashtrakutas. This thing was allowed by Rashtrakutas. By the way, इंडिया के अंदर जो ट्रेडर्स आए थे, अरब ट्रेडर्स आए थे, पहली बार वो आए थे केरला के अंदर. It was in Kerala. And Kerala में भी exactly यही same चीज हुआ था. Some of the people they stayed back in Kerala. And when they stayed back in Kerala, so we are the people वो like वो है ना शाहरुख खान की तरह. तो हम तो we always welcome by using the pose of that Shahrukh Khan. So we welcomed all people. हमने सबको welcome किया, and so many people stayed back in India and they did like matrimonial alliances and all those things, and then they were having like kids also. So men outsiders, women Indians, so their kids they were called as moplas. इन्हीं को मोपला बोलते हैं. एंड मोपला का एक रिबेलियन है. अगर आपने मॉडर्न इंडिया में पढ़ा होगा तो मोपला रिबेलियन पढ़ा था. मोपला रिबेलियन है ना. तो ये मोपला की ये यस जानवी, क्या बात है. एट दैट टाइम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज रनिंग. वेरी गुड जानवी. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था उस टाइम पे. लाइक हिंदू मुस्लिम यूनिटी वाज एट इट्स पीक, एंड ड्यूरिंग द सेम टाइम देयर वाज अ रिबेलियन गोइंग ऑन इन द केरला वेयर हिंदूज वर्सेस मुस्लिम्स हो रहा था, है ना. हिंदूज वर्सेस मुस्लिम्स हो रहा था. So this is the history of Moplas. ये लोग थे Moplas. Okay, ठीक है. शुभ्रा, साहिती, सपना, मृगांक, कांची, जानवी, सिंधुजा एंड अभिनय. लाइक सेम काम हुआ था राष्ट्रकूटास के टाइम पे. सो इसीलिए मैंने बोला राष्ट्रकूटास, these people were having liberal attitude to Arab traders. ठीक है, लिबरल एटीट्यूड टू अरब ट्रेडर्स होना चाहिए, लाइक इनका था. एंड बिकॉज ऑफ द कोस्ट लाइन, बिकॉज ऑफ द ट्रेड, दे अलाउड अरब ट्रेडर्स टू बिल्ड मॉस्क्स एंड प्रैक्टिस देयर रिलीजन. ठीक है सर. बेसिकली मोपलास वर चिल्ड्रन ऑफ दीज अरब ट्रेडर्स. सो अभिनय, मोपलास वर बेसिकली चिल्ड्रन ऑफ अरब मेल्स एंड इंडियन फीमेल्स. ठीक है, आई गेस इट्स मच बेटर. ओके अभिनय. ओके, पूरी हिस्ट्री पता होनी चाहिए ना हमें. अगर हमें हिस्ट्री पता होगी तो वी विल बी मोर रैशनल, है ना. लाइक समटाइम्स इफ सम पीपल आर डूइंग सम डिबेट्स, तो एटलीस्ट वी कैन आल्सो टेक पार्ट इन दैट एंड वी कैन यूज दोज फैक्ट्स, है ना. यूज दोज फैक्ट्स आल्सो. आज के टाइम पे तो क्या है ना, विदाउट फैक्ट्स लोग डिबेट करने लग जाते हैं ना. विदाउट फैक्ट्स लोग डिबेट करने लग जाते हैं. अभी आजकल तो बहुत मशहूर हो गया ये चीज. किसी को पता कुछ भी नहीं है. देखो डिबेट ऐसे करेंगे जैसे लाइक टेबल पे चढ़ के बैठ जाएंगे डिबेट करने के टाइम पे. बट इट इज सेड whosoever, लाइक जो सबसे ज्यादा उछल रहा होता है ना, उसकी सबसे कम इंफॉर्मेशन उसी के पास होती है. इट इज सेड लाइक दैट, है ना. whosoever is having more information, वो थोड़ा मैच्योर तरीके से बिहेव करेगा एंड साइड में चुप बैठा रहेगा, सुनता रहेगा एंड मन ही मन सोचेगा तुम्हें पता ही नहीं है कुछ बात, है ना. ओके, so please don't involve yourself in such useless debates. आजकल बहुत ज्यादा होती रहती हैं. Okay, so now Danti Durga. So Danti Durga, when he established the new dynasty, he took the title जो गुप्ताज ने पहली बार लिया था, महाराजा धीराज. He took the title of Maharaja Dhiraj. ठीक है, and established new dynasty. His successor Krishna, actually Krishna I. Now this man is very, very important. Why this man is very important? Because he built one temple. The name of the temple is Kailash Temple. और कंफ्यूज नहीं होना है पल्लवास वाले टेम्पल्स के साथ में. Kailash Temple at Ellora. Kailash Temple at Ellora. It is the UNESCO World Heritage Site. It is the largest monolithic rock cut temple.
लार्जेस्ट मोनोलिथिक रॉक कट टेम्पल। ठीक है, अभी थोड़ी देर में आपको इसकी पिक दिखाता हूं। ओके, आई विल शो यू, गिव मी अ मिनट प्लीज। वेयर इज द कैलाश टेम्पल? It's 51. This is the Kailash temple. Can you see this? Kailash temple, and this is the sculpture which has been done here. Okay, this is the largest monolithic rock cut temple. Yes, Sindhuja. Okay, Kailash temple, and this is a UNESCO World Heritage Site. Okay, now Krishna one, Krishna one के बाद the person who came after Krishna one, the person who came after Krishna one, this man, the name of the person was, where is the slide gone? Yes, the name of the person was Dhruv. The name of the person was Dhruv. ठीक है, ये सब ना, दिस इज पंचायतन। वो स्टेलेट प्लान तो होयसालास के टाइम पे आएगा ना। द स्टेलेट प्लान विल बी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ होयसालास। अभी तक होयसाला नहीं आया। होयसालास विल रिप्लेस राष्ट्रकूटास in the same area. So next man was Dhruv. So Dhruv was the person, and this man Dhruv fought both Palas and Pratiharas. He fought both Palas and Pratiharas. दोनों से इसकी लड़ाइयां हुई, Palas and Pratiharas. Yes, Janvi, Dhruv was the name of this person. After Dhruv, it was okay. He fought Palas and Pratiharas. Palas, में the name of the person who was defeated by Dhruv was Dharampal. And Pratiharas में he defeated Nagbhat. So he defeated Nagbhat of Pratiharas and Dharampal of Palas. After Dhruv was Govinda III, not required. After Govinda III, it was Amogh Varsha required. Amogh Varsha. Now, why this man is required? Amogh Varsha. Amogh Varsha थोड़ा सा important है हमारे लिए. This man, Amogh Varsha के लिए बोला जाता है, like he is also known as Ashoka of the South. Ashoka of the South. Now think, why a person will be called as Ashoka of the South? क्यों बोलेंगे? आखिरकार क्या काम किया होगा इस व्यक्ति ने? Why he is called as Ashoka of the South? ऐसा क्या किया होगा? Vast empire, inscription, pillars. तो अशोका इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था सिंधुजा? I guess he was important for something else. He was more important for his nature. कौन सा nature? He was more important for his peace-loving nature. He was more important for his peace-loving nature. Very few people in the history you will find with such type of nature. Very few, very few. He is also known for something that is called as religious temperament. Religious temperament. And also his interests in fine arts and literature. So all these things also fits for this man Amogh Varsha. And so this man is one of the most famous, though he was defeated. Though he was defeated. मैंने ऐसा कभी नहीं बोला कि सारे मैच जीते इसने. He was defeated. But still he is one of the most famous and is called as Ashoka of the South. ठीक है? He maintained friendly relations with his neighbors. इसका एक उस टाइम पे पड़ोसी हुआ करते थे, गंगाज ऑफ मैसूर. गंगाज ऑफ मैसूर, ये पड़ोसी हुआ करते थे. So he was having like friendly relations with the people. He was having friendly relations with the people. His mentor was a Jain monk
His name was Jinnah Sena. His mentor was a Jain monk. His name was Jinnah Sena. Jinnah Sena was a Jain monk as well as mentor of Amog Varsha. He was the mentor of Amog Varsha and he wrote certain books. He wrote certain books. तो थोड़ा सा important होंगी books. Now tell me, he is a Jain monk. He is a Jain monk. He'll be writing books on which subject? What will be the theme? Theme क्या होगी? Jainism. बिल्कुल सही बात एकदम. So he wrote two books. One book was, first book is Adi Puran. Adi Puran. This book, Adi Puran, it is related to first Jain Tirthankar. What was that name? नाम क्या था फर्स्ट जैन तीर्थंकर का? What was the name of the first Jain Tirthankar? अरे मैंने बताया था एक राजस्थान में एक there is a temple also. Very good शुभ्रा. शुभ्रा को याद आया, बाकी सब भूल गए. ऋषभ नाथ और ऋषभ देव, है ना. ये जगह भी है एक उदयपुर के पास में इन राजस्थान. There is a place by the same name. By the same name, like one of the very sacred places of Jains in Rajasthan. So Adi Puran, but he could not complete it. Actually, it was completed by someone else. The book was completed by another person. His name was Guna Bhadra. Guna Bhadra. Guna Bhadra. He could not complete it as he was busy in writing another book. The book was Parsva Budhay. Parsva Budhay. So Parsva Budhay is for like the subject is Parsvanath. Who was Parsvanath? Who was Parsvanath? ट्वेंटी-थर्ड तीर्थंकर. बिल्कुल, क्या बात है. He was the 23rd तीर्थंकर. ठीक है, 23rd तीर्थंकर. तो जिना सेना के लिए आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी. जिना सेना wrote Parsva Budhay. Also, he along with Guna Bhadra wrote Adi Puran. Amog Varsha himself was a writer. He himself was a writer and he wrote one book called as Kaviraj Marg. Kaviraj Marg. He also wrote a book Kaviraj Marg. It is one of the earliest Kannada works on poetics. One of the earliest Kannada works on poetics, Kaviraj Marg. Okay? Okay. So, in fact, this man, Amog Varsha, now again there is some controversy. Like many people feel he also wrote one book more. The name of that book was Prashnottar Ratna Malika. Prashnottar Ratna Malika. But बाकी कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं ये इसने नहीं लिखी, किसी और ने लिखी है. So there are some people who feels that Prashnottar Ratna Malika was also written by Amog Varsha. This is like written for Jains. Like it is a Jain book written in Sanskrit. Written in Sanskrit. ठीक है? So basically Rashtrakutas, the language of Rashtrakutas was Kannada. The language of Rashtrakutas was Kannada, but they also patronized Sanskrit. They also patronized Sanskrit. The state of Rashtrakuta was called as Rashtra. The state was called as Rashtra and it was divided into Vishyas. Vishyas were divided into villages. And who was the head of Vishyas? Vishyapati. Who was the head of Rashtra? Rashtrapati. ठीक है. Now, because Arabs आते थे यहाँ पर, है ना, Arabs trading करने के लिए आते थे. When Arabs used to come here and they saw women, तो इन्होंने अपने यहाँ पर जाके बताया कि do you know women in India do not veil faces.
डू नॉट व्हील फेसेस, विमेन इन इंडिया डू नॉट व्हील फेसेस। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अच्छा, विमेन इन इंडिया डू नॉट व्हील फेसेस, ऐसा भी है। तो एक अरेबिक टेक्स्ट है, द अरेबिक टेक्स्ट इज, द नेम ऑफ दैट अरेबिक टेक्स्ट इज सिलसिलत सिलसिलत अल त्वारिक। सिलसिलत अल त्वारिक। According to this text, Rashtrakutas are described as one of the four principal empires, one of the four principal empires of the world. ओके, तो यहां से हमें पता चलता है कि राष्ट्रकूटास उस टाइम पर ठीक ठाक काम कर रहे थे। तो सिलसिलत अल त्वारिक के हिसाब से राष्ट्रकूटास वर वन ऑफ द फोर प्रिंसिपल एम्पायर्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ड्यूरिंग देयर टाइम वैष्णविज्म एंड शैविज्म flourished. Now tell me, in addition to Vaishnavism and Shaivism, do you think any other religion that will progress, that will make progress? Do you think any religion will make progress? Abhinay is saying Islam, Sindhya is saying Jainism. So Jainism. So basically अभी इस टाइम तक आते आते people will not convert. Saiti, Abhinay, Shubhra, people will not convert. It was Jainism. अभी लोग इस्लाम को कबूल नहीं करेंगे। लोग इस्लाम को कबूल कब करेंगे? When Muhammad bin Qasim will be invading Sindh. When Muhammad bin Qasim will be invading Sindh, उस टाइम पर some people forcefully, some people like because there will be some taxes will be imposed कि या तो आप convert करो या फिर tax pay करो। Those tax were called as, like that tax was called as जजिया। उसी टैक्स को जजिया बोलते थे, है ना। ये ऐबक ने भी लगाया था। It was Akbar who abolished this tax, है ना। पूरी दिल्ली सल्तनत के दौरान ये टैक्स रहेगा। You need to pay tax if you don't want to convert. It was that the people who paid this tax were called as zimmis, and zimmis meant protected. Zimmis का मतलब होता था protected। अभी इनको कोई नहीं छेड़ेगा because these people are the ones who are paying tax. If you cannot pay the tax, you need to convert. It was something like this. Okay, so Akbar was the person who will abolish this tax, and again Aurangzeb will be the person who will reimpose it, jizya. Okay, who will impose this tax, jizya. So अभी क्या हो रहा है कि अभी still like people will not convert, है ना, will not be converting. ये start होगा most like broad तरीके से, ज्यादा तरीके से, है ना। मैं बात कर रहा हूँ बहुत बड़े लेवल पे, एक इक्का दुक्की की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बड़े लेवल पे बात कर रहा हूँ। So this will start with the arrival of Muhammad bin Qasim in the Sindh, ठीक है। But yes, trade with Arabs flourished. The trade with Arabs, it flourished. The trade with Arabs flourished. These people, in addition to Kannada, also patronized Sanskrit. In the court of Amogh Varsha, there was a great mathematician. His name was Veeracharya. So Veeracharya was a mathematician in the court of Amogh Varsha, and this man wrote a book called as Ganit Ashram. The book is called as Ganit Ashram. ठीक है, गणित आश्रम। और जीना सेना के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। जीना सेना wrote 2 books, one with Gunabhadra, Adi Puran, and another
पार्श्वबुदय, already I have told you the 2 books written by Jina Sena. ठीक है. And एक और बुक लिखी थी, what was the name of the book? Yeah, the name was Sakatyan. The name of the book was Sakatyan. It was written by Amog Vritti. Amog Vritti. Like the book is related to grammar. Grammar. ठीक है. The book was what was imported. Number 1 horses. Number 1 horses. सबसे ज्यादा horses were imported. उस टाइम पर सबसे ज्यादा जो लोग जो इंपोर्ट कर रहे थे हॉर्सेस को इंपोर्ट कर रहे थे. ऑल्सो वाइन, ऑल्सो सम गोल्ड, प्रेशियस स्टोन्स. ठीक है. तो और इंडिया से जा क्या रहा था? व्हाट वाज एक्सपोर्टेड? व्हाट वाज एक्सपोर्टेड? एक्सपोर्ट क्या हो रहा था इंडिया से? what are the things like that must be exported? Tell me. Spices. Anything else apart from spices? Apart from spices, cotton, pearls और कुछ? gold, pearls. क्रॉप्स. अरे मुझे बात समझ नहीं आ रही है. आर्टिसंस को क्यों भूल गए हो आप लोग? Why no one is going for artisans? हमारे आर्टिसंस कितने इंपॉर्टेंट थे भाई. मैं तब से वेट कर रहा हूं, कोई तो लेकर आओ आर्टिसंस को, है ना. तो प्रोडक्ट्स भी तो थे. so many finished products. those were like made by artisans, जिनको ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से सबको एग्रीकल्चर चूज करना पड़ा था, है ना. ऐसे ही था ना. Okay, so Amog Vritti was a person in the court of Amog Varsha, and he wrote a book called Architecture की. अगर हम बात करें तो one temple was कैलाश टेम्पल. ये तो मैंने अभी दिखाया आपको, कैलाश टेम्पल. There are some other temples as well. Now, एक बार स्लाइड्स पर आगे चलते हैं. So this is that Kannauj triangle. This was the area of Rashtrakutas, Manyakheda. You can see this place. Then Rashtrakutas, Danti Durga हमने देख लिया. Defeating Kirtivarman II. Krishna I built the magnificent rock cut monolithic Kailash temple, है ना. And इससे ज्यादा हमें यहाँ से जरूरत नहीं है. Danti Durga founder, Krishna I. Govind III, victories over North Indian kingdoms. Amog Varsha wrote Kaviraj Marg, first poetic work in Kannada language. And Krishna III defeated Cholas at Takkolam. ये भी इतना important नहीं है actually. This is important, Amog Varsha. And yes, this is important. He built Krishneshwara temple at Rameshwaram. Krishna III Krishneshwara temple बनाया रामेश्वरम में. I'll show you the pic. So ये ऑलरेडी मैंने बता दिया. राष्ट्र विषया विलेज सोसाइटी, वैष्णविज्म, शैविज्म, जैनिज्म, एंड समथिंग इंपॉर्टेंट यहाँ पर. सो पार्श्वबुदय, गुणाभद्रा, वीराचार्य. पंपा was one of the greatest of the Kannada poets. Pampa, yes. इसको एक Pampa was a Kannada poet, and he wrote one work. The work is called as Vikrama Sena Vijay. Vikrama Sena Vijay. It was written by Pampas. Please repeat. Sakatyan. Sakatyan, it was a book. Sorry. Sakatyan was a book written by Amog Vritti, who was present in the court of Amog Varsha. The book is related to the grammar. ठीक है सब ना. Then आदि पुराण, ये मैंने बता दिया किसने लिखी है बुक. आदि पुराण. आदि पुराण के बाद में आर्ट एंड आर्किटेक्चर, कैलाश टेम्पल एट एलोरा. यस कांची.
Sir, as you said, Sakatyan was a person or a book? सकतयान बुक का नाम है, written by अमोघ वृत्ति. Okay, actually I saw the just slide, the previous one. हाँ. In that I guess it's written, it's a person, I guess. अच्छा, मैं भी एक बार देखता हूँ, मैं एक बार ये बता दूं. So देखो, there are two important things. One is Kailash temple, another is Elephanta caves. Have you heard about this Elephanta caves? किसी ने where is Elephanta caves? कभी सुना है किसी ने where are Elephanta caves? Where are Elephanta caves? Maharashtra. Elephanta caves. Has anyone been to Elephanta caves? कोई आज तक कभी किसने देखा Elephanta caves? नॉट येट, नो, किसी ने भी देखा. तो एलिफेंटा केव्स, ये मुंबई से आपको एक बोट में बैठ के जाना पड़ेगा, थोड़ा सा दूर है ना, थोड़ा सा दूर. एंड इट्स एन बेसिकली आइलैंड. इट्स बेसिकली आइलैंड. ठीक है, ये एक आइलैंड है. आइलैंड के ऊपर कुछ केव्स हैं. एंड सम सिमिलैरिटीज हैव बीन फाउंड बिटवीन द स्कल्पचर्स ऑफ कैलाश एंड एलिफेंटा. Because of these similarities, it is said that Elephanta caves were probably built during the Rashtrakuta times. They were built during the Rashtrakuta times. The original name of these caves, Elephanta caves, is Shripuri. The original name is Shripuri, and जो नाम था ना ये Elephanta, basically ये नाम दिया था पोर्चुगीज ने. When Portuguese came to India, और पोर्चुगीज ने केव्स को देखा, तो दिस वाज द नेम दैट वाज गिवन बाय पोर्चुगीज. यहां पर त्रिमूर्ति इज प्रेजेंट. त्रिमूर्ति. तो वेयर थ्री फेसेट्स ऑफ शिवा आर प्रेजेंट. वेयर थ्री फेसेट्स ऑफ शिवा आर प्रेजेंट, showing like the creator, protector and destroyer. है ना, creator, protector and destroyer. Also some Buddhist stupas are also present here. कुछ बुद्धिस्ट स्तूपास भी हैं. ठीक है. So this is the Elephanta caves. Elephanta caves, probably it was built during the Rashtrakuta times. We don't have any proper evidence, but the similarities between the Kailash temple, the sculptures of Kailash and Elephanta caves, it shows that like both were built by one dynasty. इससे पता चलता है कि दोनों एक ही डायनेस्टी ने बनाई होंगी. And these caves, the original name was Shripuri. The name Elephanta was given by Portuguese. जो कैलाश टेम्पल था, कैलाश टेम्पल, yes, this temple, कैलाश टेम्पल, ये कैलाश टेम्पल, like it shows some influence of Chalukyas as well as Pallavas. दोनों का इन्फ्लुएंस यहाँ पर देखने को मिलेगा. चालुक्यास एंड पल्लवास, दोनों का इन्फ्लुएंस थोड़ा सा देखने को मिलेगा यहाँ पे. चालुक्यास एंड पल्लवास. एंड दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू विच गॉड? दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू विच गॉड? शिव जी. लॉर्ड शिवा. लॉर्ड शिवा है ना, लॉर्ड शिवा. ऑल्सो यहां पर विष्णु भी डिपिक्टेड है. लॉर्ड विष्णु इज ऑल्सो डिपिक्टेड हियर. ठीक है, लॉर्ड विष्णु इज ऑल्सो डिपिक्टेड हियर. एंड कमिंग टू द डाउट ऑफ कांची, सो थैंक यू कांची. कांची एक्चुअली, कांची एंड ऑल ऑफ यू, प्लीज चेंज द थिंग. थोड़ी सी मुझसे गलती हो गई. बेसिकली द नेम ऑफ द पर्सन इज सकतयान. द नेम ऑफ द पर्सन इज सकतयान एंड द नेम ऑफ द बुक इज अमोघ वृत्ति. Amogh Vritti. It is like Amogh Vritti Sakatyan, who was present in the court of Amogh Varsha. ये मुझसे उल्टा हो गया, so please change that. Amogh Varsha की कोर्ट में there was one person called as Sakatyan and he wrote Amogh Vritti. ठीक है, इसको प्लीज चेंज कर लेना, Amogh Vritti and Sakatyan को. So this was the Rashtrakutas. ये थे Rashtrakutas. So tell me, Rashtrakutas clear to all? So if we just summarize about Rashtrakutas, अगर हम summarize करें about Rashtrakutas, तो Rashtrakutas, they were the feudatories of Chalukyas. The capital was situated at Saiti. Yes, Saiti, are you there?
Yes, sir. Yes. Where is the capital? Manyakheda or Malkhet, which is in Karnataka. Okay, Malkhed or Manekheda, and they involved themselves in the tripartite struggle. They involved themselves in tripartite struggle along with Palas and Pratiharas. Also, they did trading with the Arab traders and allowed them to build mosques and practice their religion in India. Okay, Danti Durga ke baad mein the important person was Krishna I. Krishna I, he built the world famous Krishna temple at Kailash temple at Ellora, and also he defeated Gangas of Mysore. You can add this point. Krishna I में आप ये भी add कर लो. He defeated this man Gangas of Mysore. Gangas of Mysore को भी हराया. और ध्रुव के लिए ध्रुव was the person who defeated both. Who defeated both? दोनों को हराया. किस को हराया? पालास को भी हराया and प्रतिहारास को भी हराया. Palas and Pratiharas, PP. Whose influence can we see in Kailash Temple? Kailash Temple में आपको influence देखने को मिलेगा पल्लवास का भी और चालुक्यास का भी, है ना. जो पल्लवास की स्टाइल है, द्रविडियन स्टाइल, वो भी देखने को मिलेगी. चालुक्यास की जो स्टाइल है, वेसरा स्टाइल, आपको वो भी देखने को मिलेगी. So we cannot say this temple belongs to which style of temple. Like both characteristics of both the styles are present. Okay, Abhinay clear है? Then Dhruv defeated Nagbhat and Dharampal. Dhruv ke baad who was the person? The important person was Amogavarsha. Amogavarsha was known as Ashoka of the South because of his peace-loving nature and religious temperament. And he maintained friendly relations with his neighbors. Jinasena was a Jain monk and a mentor of Amogavarsha who wrote 2 books. One was Parsva Budhay, and another was Adi Puran. Adi Puran was completed by Gunabhadra. ठीक है. What's the difference between Lord Shiva and Lord Vishnu? सबना ये कैसा क्वेश्चन है सबना? Lord Shiva and Lord Vishnu, these are the two different gods. इनके तो पूरे sects ही अलग हैं. Shaivism and क्या बोलते हैं Vaishnavism, है ना. Sects ही बिल्कुल अलग है ना सबना. ये तो like Hindus के these are the two different lords, two different gods. So Parsva Budhay is for Parsvanath, and Amogavarsha himself wrote 1 book, Kaviraj Marg. It is the earliest Kannada work on poetics. Also, some people feel that he also wrote another book. The name of that book was Prashnottara Ratnamalika. Prashnottara Ratnamalika. Also, Rashtrakutas, कौन सी language को patronize किया इन्होंने? Which language was patronized? Kannada language thi, still they patronize Sanskrit. So basically 2 languages, Kannada and Sanskrit. And during these time, Vaishnavism, Shaivism and Jainism progressed. There was harmony between religions. This is something common you will find. This is something very common you will find. Harmony between religions. है ना. हार्मनी बिटवीन रिलीजन. अभी तक कहीं पे देखा कि लोग एक दूसरे को रिलीजन के नाम पर कत्लेआम कर रहे हैं, है ना. यू विल नॉट फाइंड दिस इन द हिस्ट्री. अभी तक आपने नहीं देखा होगा ना, ऑन द नेम ऑफ रिलीजन. पहली बार इस इंडिया कंपनी के आने के बाद होगा, है ना. लाइक आफ्टर द कमिंग ऑफ इंग्लिश इन इंडिया. So because of their interest and because of their policy of divide and rule, they started like कुछ ऐसा हुआ इंडिया के अंदर that both of us, Hindus as well as Muslims, like they started like fighting like anything, है ना, fighting like anything. In fact, Jinnah, so many people like Jinnah is considered as क्या बोलते हैं पाकिस्तान में जिन्ना को, what's the title that he is given? Qaid-e-Azam. Jinnah, who is called as Qaid-e-Azam in Pakistan, is not liked by people in India. I hope सबको पता होगी ये बात, है ना. Jinnah, who is called as Qaid-e-Azam in Pakistan, is not liked by the people in India. But if you like read modern India, already I know once you have done and second time you will be doing with me, I guess most probably. So Jinnah, मैं आपको बताऊंगा, Jinnah was also a great nationalist. लेकिन बाद में एक होता है ना, like एक टाइम तक he was a great nationalist,
thereafter they were कुछ तो हुआ because of which now he thought कि ये क्या हो रहा है, where I am going, है ना, ये हो क्या रहा है. लाइक एक होता है ना, एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते, ऐसा सुना होगा ना सबने, एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते, तो एक शेर को अपना रास्ता बदलना पड़ेगा. So he was also a great nationalist, but like after some time he parted his ways. अपने ways को कांग्रेस से अलग कर लिया, and he became like undisputed leader of Muslim League. Otherwise starting days में he was जो मुस्लिम लीग ने, इनफैक्ट जब चौधरी रहमत अली ने पहली बार नाम दिया था ना पाकिस्तान, it was चौधरी रहमत अली who gave the term Pakistan. So it was Muhammad Ali Jinnah like who was against it. Do you know this thing? है ना, चौधरी रहमत अली ने नाम दिया था, Jinnah was against this name. Jinnah was against partition. है ना, बाद में लेकिन कुछ और हो गया. बाद में सबको अपना अपना चाहिए था ना. Everyone wanted like personal interest भी तो थे सबके, है ना. Everyone was having like their personal interest also. So ये बात हम बाद में करते हैं, देखते हैं वहां पर क्या होता है. तो यहाँ पर मैंने एक चीज और बताई थी आपको, वीराचार्य was a mathematician who was present in the court of Amogh Varsha, and he wrote Ganitashram. And architecture में मैंने आपको बताई दो चीजें. First, Kailash Temple at Ellora, and second was the Elephanta Caves. Two things. ठीक है, clear to all? Shall we move ahead? प्रतिहारास पे चलें. So this was all about Rashtrakutas. अब चलते हैं प्रतिहारास पे. इनके contemporaries. Please remember the contemporaries. Contemporaries याद रखना. And it's very, very important. Please remember the contemporaries. Sir, how this name came Elephanta? Because सब ना कहीं कहीं पे ना इंडिया के अंदर naturally elephants present है. Naturally elephants present है. I don't know if you have been there or not. Like there is a place called as Vaishno Devi. And there are two like Vaishno Devi. It is situated on Trikut Parvat. There is a temple Trikut Parvat, and you need to like go something like this here. You need to go something like this on this Trikut Parvat. When you are going like this, like पुराने जमाने का एक रास्ता अलग था, उसके बाद नए जमाने का एक और रास्ता आया, उसके बाद गाड़ियां स्टार्ट हो गई, बैटरी व्हीकल्स एंड ऑल. बट जो पुराना वाला रास्ता है ना, उसमें एक जगह ऐसी आती है, the hill appears as if it's the mouth of elephant, and the place is called as Hathi Matha. Hathi ka matha, and it is something you need to like walk on this. This is the way. यही रास्ता है. It is very difficult. It is very difficult to climb. सबसे मुश्किल जो ट्रैक्ट आता है ना क्लाइंब करने का, वो ये हाथी मत्थे की चढ़ाई मानी जाती है. बहुत मुश्किल चढ़ाई होती है. And if you are having a child with you, and if you are carrying the child in your lap, then it becomes nearly impossible to walk. बहुत एकदम स्लोपी हाइट है. तो ऐसे ही जब आप एलिफेंटा में जाओगे, एलिफेंटा केव्स में जाओगे, so वहां पर you will find like there are hilly area, hilly terrain, and दूर से देखने पे like sometimes it appears as if it is the hill appears as if it is having the shape of an elephant. So the name was changed from Shri Puri to Elephanta Caves. Okay सबना, ठीक है. अब चलते हैं आगे प्रतिहारास पे. The next is Pratiharas. So again, I'll use the blank slide. That is, ज़्यादा मजे blank slide पे आते हैं actually, है ना, या फिर like white board या blank slide पे ज़्यादा मजे आते हैं. ये वाला ना अपना slide वाला थोड़े कम, मुझे personally थोड़े कम मजे आते हैं. Like नहीं तो हम क्या करते हैं, वो पढ़ने लगता है slides को पढ़ने. It becomes very boring to me as well as I guess for you as well. मुझे तो personally it appears really very boring. I don't like this type of teaching. Like person will be coming like slides हम खुद से ही पढ़ सकते हैं ना, घर से ही पढ़ सकते हैं. तो अगर कोई चीज छूटेगी भी, you will be having the slides. अच्छा हाँ, one more thing, which is that PPT that you all are not having. Tell me. The management is asking me like some PPT you have not received. Can you tell me which is that PPT that you want? मुझे बताओ कौन सी PPT चाहिए आपको.
I'll ensure that PPT is with you. Transition phase, मैंने दी ना आपको transition phase. The name of that PPT is not transition phase. The name is medieval history, I guess. Give me a minute. मैं बताता हूँ what is the name of the PPT. Already आपके पास है वो, उसका नाम अलग है. Medieval history. The name of the PPT is medieval history. ठीक है, उसके ऊपर एक किले की फोटो बनी हुई है. There's a picture of a fort on that PPT. ठीक है, ट्रांजिशन फेज वाला, उसका नाम ट्रांजिशन फेज नहीं है. If you want, I can change the name to transition phase and then can share with you all so that you all are having no problem at all. If you want me, like I can do that. Is a like thing of seconds. Yes, Shubhra. Yes, Shubhra. First class of the transition phase, you showed us a PPT in which there was about the world, like हाँ, तो empire. वही मैंने शुभ्रा वही वाला मैं बोल रहा हूँ. द सेम PPT, उसी PPT का नाम है मेडिवल हिस्ट्री. उसके ऊपर एक फोर्ट की पिक्चर भी लगी हुई है. अगर आप चाहोगे तो मैं उस PPT का नाम चेंज करके और आपको वापस से मैं अब शेयर कर, है ना. वैसे आपके पास है फिर भी, क्योंकि वो मुझे याद है, मैंने खुद सेंड किया. मैं एक काम करता हूँ, मैं उसका नाम चेंज करके ना फिर से भेज देता हूँ. इज देयर एनी अदर PPT दैट यू आर नॉट हैविंग? अभी तक जितना भी हमने किया है, इज देयर एनी सिंगल PPT फ्रॉम IBC और लाइक प्री हिस्टोरिक टाइम से लेके अभी तक? No sir, we have received all. Professor. Yes, Indra. Like the number, you generally share the PPTs with like the serial numbers, right? So that's what I'm thinking. Like the 9's missing. I don't know if it's missing or if it was just numbered wrongly. Which is missing? 9th. Yeah, because like after foreign invasions of Northwest India, which says 8, there's Sangam age which says 10. So I don't know if 9's missing or if it's just not there. एक मिनट में चेक कर लेता हूँ. Give me a minute. Yes, Sangam age is 10. Foreign invasions is 8. What about 9? Give me a minute. I'll tell you what about 9. Maybe maybe मैं mathematics भूल गया हूँगा. अच्छा, the 9th is like just ये है ना अपनी foreign invasions. In the same PPT you will find native successors. Native successors. So okay, Satvanas and all. Actually that is 9th. Satvanas is 9th, है ना, and that is like available in the 8th. So that is the problem, I guess. फिर भी एक बार चेक कर लेता हूँ मैं. Where is the yeah, Satvanas is 9th. I have checked it. Satvan, the number of Satvanas PPT is 9th. वो already आपकी उसी में पीछे लगी हुई है. ठीक है? Okay, so मैं transition phase वाला उसका नाम change करके I'll resend it. So now coming on to the Gujjar Pratiharas. प्रतिहारा का मतलब क्या होता है? प्रतिहारास, it means doorkeepers. Pratiharas means doorkeepers. Doorkeepers like present day watchmen. Doorkeepers like present day watchmen. These people claim to be descendants of Lakshman. कौन सा लक्ष्मण? Which Lakshman? Which Lakshman we are talking about? These people, Pratiharas, they claim to be descendants of Lakshman. So Ram Lakshman, have you heard? Ram Lakshman, Ramayana. है ना, लक्ष्मण ने श्री राम के चरण पादुका रखे थे थ्रोन के ऊपर. He like did not sat on the throne, है ना. So those Lakshman, like that Lakshman, these people claim themselves that who are we? That we are descendants of Lakshman. And basically these people are pastoralists as well as like fighters like Jat community. They are also pastoralists and like fighters as well. And Jat community. In my area, like you will find people from like this division, this caste. Now these people, ये बहुत important है. क्यों important है? They were very important. Like during their time,
अरब्स ने इन्वेजन्स शुरू कर दिए थे इंडिया के अंदर. अरब्स हैड स्टार्टेड इन्वेडिंग इंडिया, है ना. पहले तो अरब ट्रेडर्स, है ना, अरब ट्रेडर्स. तो अरब ट्रेडर्स के साथ साथ अभी अरब इन्वेजन्स भी स्टार्ट हो गए थे in the region where Pratiharas were there. Okay, I'll show you the region. हिस्ट्री में ना मैप्स भी इंपॉर्टेंट है एक्चुअली. तो कई बार क्या विदाउट मैप्स इतना बढ़िया समझ नहीं आता. 43. Okay, can you see this area? Now, if you see this area, especially this part, so what will happen? These people, Arabs will be trying to come and invade in this region. So अब इस region में who were ruling? Pratiharas, Gujar Pratiharas, they were ruling in this area. So they were instrumental in containing Arab invasions. वैसे तो we don't know like who founded Gujar Pratiharas, but it is usually said the dynasty was started by a person. His name was Harichandra. Harichandra, he was a Brahmin. Harichandra was a Brahmin, है ना. But we are not sure. This is something like mythological. क्योंकि बाद में जाके गुज्जर प्रतिहारास, like they'll be Rajputs. They'll be one of the like one sect of Rajputs. जिस टाइम पे इंडिया will be divided, है ना. ये रीजन मैंने दिखाया था different Rajputs. तो they were also like बाद में जाके ये भी राजपूत हो जाएंगे. But it is generally said कि the Pratiharas, they were founded by Harichandra and who was a Brahmin. So again some controversy. And we are not very much sure. About these people, Pratiharas. So Pratiharas के लिए who were the important kings? Pratiharas के कौन थे? एक बार ये देख लेते हैं. तो the number one Gujar Pratiharas. वापस चलते हैं. Or we can use this. Yes, we can use this. So please don't take this. This is having more space actually. And so I'm using this slide. So they consider themselves to be the descendants of Lakshman. Like Lakshman के क्यों? And doorkeeper Lakshman का क्या link है? Like it is said that Lakshman was the doorkeeper to his brother Ram. It is said that Lakshman was doorkeeper to his brother, that is Prabhu Shri Ram, or like the hero of Ramayana. Okay, so these people look Lakshman as their hero. Lakshman is considered as their hero and बोलते हैं कि हम तो भैया लक्ष्मण के वंशज हैं, है ना, हम लक्ष्मण के वंशज हैं. So इसीलिए इसको like बोला जाता है कि doorkeepers, Pratiharas, doorkeepers. So the kingdom was founded by Harichandra. और कहाँ पे found किया kingdom? Kingdom was first found in the place called as Jodhpur, at present second largest city of Rajasthan. Do you know this? At present second largest city of Rajasthan, Jodhpur, a city where AIMS is there, a city where IIT is there, a city where Air Force is there, a city where Army is there, a city where BSF is there, a city where SSB is there, a city where Office of RAW is there, a city where Office of IB is as well as there, and a city where ITBP is also present, a city where very beautiful temples are also there. अभी दिखाऊंगा एक टेम्पल आपको जो प्रतिहारास ने बनाया था. Okay, one city and so many things, and a city which was my first posting. And again, very important. And this was my first posting, Jodhpur. By the way, so already like थोड़ा सा एक attachment है मेरा जोधपुर के साथ में. And actually, it's a city like it's very few cities. It is having so many things, so many things. Everything you will find in Jodhpur. ठीक है, इतना बढ़िया शहर. Okay, so. फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर्स. तो इंपॉर्टेंट रूलर्स की शुरुआत होती है हमारी नागभट्ट से. फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर वाज नागभट्ट.
द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर, तो कुछ जैसे हमने उधर देखे थे राष्ट्रकूटास में, ऐसी कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट रूलर्स की चेन देख लेते हैं. सो नागभट was the person like who successfully resisted the invading Arabs. अरब्स इंडिया में इस रीजन में इन्वेड करना चाहते थे, है ना, क्योंकि उस टाइम पे व्हाट अरब्स वांटेड, दे वांटेड टू प्रोपेगेट देयर रिलीजन, है ना, नया रिलीजन बना था उस टाइम पे, है ना, नया रिलीजन है, दे वांट टू प्रोपेगेट देयर रिलीजन. सो इट वाज नागभट who will resist. इससे पहले सिंध कैप्चर हो चुका था बाय दिस टाइम. अरब्स ने सिंध को इन्वेड कर चुके थे, बट बिकॉज ऑफ नागभट अरब्स कुड नॉट इन्वेड द गुजरात एरिया. ठीक है, तो नागभट डिफीटेड अरब्स, और अरब्स का जो एक ड्रीम था टू एस्टैब्लिश रूल ऑफ कैलिफ, वो नागभट ने पूरा नहीं होने दिया. ठीक है, द एरिया ऑफ नागभट इन एडिशन टू गुजरात, he was also ruling in present day Rajasthan, also in the present day western MP, that is called as Malwa. This was the region where he was ruling, है ना. वैसे नागभट ने अरब्स को तो हरा दिया, लेकिन अपने ही भाई लोग ध्रुव डिफीटेड नागभट, है ना, इसका में कुछ करना नहीं है ना. सो ये चलता रहेगा आपस में, इतना आपस में लड़ेंगे, खूब लड़ेंगे आपस में ये. सो नागभट वाज डिफीटेड बाय राष्ट्रकूटास. After Nagbhat, the next person was Vatsaraja. So Vatsaraja was another person. This man was the person like who defeated Palas as well as Rashtrakutas and made Kannauj his capital. कन्नौज मिल गया प्रतिहारास को. ठीक है, कन्नौज मिल गया प्रतिहारास को, एंड वत्सराजा ने कन्नौज को क्या बना लिया, अपना कैपिटल बना लिया. देन नागभट टू like succeeded in and not important actually. नागभट 2 के बाद the next person was Mihir Bhoj. You all must have heard the name Bhoj. कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली. So this is the Bhoj, and full name was like the person's name was Mihir Bhoj. Sir defeated Palas and Rashtrakutas. Yes, defeated Palas and Rashtrakutas both. ठीक है, कन्नौज को कैसे बनाएंगे कैपिटल? अभिनय, कन्नौज को कैपिटल तभी तो बना सकते हैं ना, पहले दोनों को तो हरा दो, उनको भी तो चाहिए कन्नौज, नहीं तो कैसे बना सकते हैं, है ना. तो दिस वाज द पर्सन हु सक्सीडेड, ही डिफीटेड बोथ, दोनों को हराया कि ऐसे कैसे हम बनाएंगे, देखो. सो नाउ दिस मैन भोज, ही इज कंसीडर्ड मिहिर भोज is considered as most successful. Also the most popular. ठीक है, अब मीर भोज के टाइम पर भी कैपिटल वाज कन्नौज. During his time, two Arab merchants visited. The names were Sulaiman and Al-Masudi. ठीक है, Sulaiman and Al-Masudi, like they came to the court of Mihir Bhoj, है ना. मैंने बता रहा हूँ ना आपको कि they wanted to propagate their religion as well as do trading. So merchants, trading. तो अगर आपको अपना रिलीजन को प्रोपेगेट करना है, दैट मीन्स यू नीड टू गो टू डिफरेंट प्लेसेस, है ना, ये करना पड़ेगा ना आपको. इफ यू वांट टू प्रोपेगेट योर रिलीजन, यू नीड टू गो टू डिफरेंट प्लेसेस. बट इफ यू विल गो टू डिफरेंट प्लेसेस ओनली टू प्रीच रिलीजन, उससे क्या होगा, दैट विल कॉस्ट यू
दैट विल कॉस्ट यू, आपका पैसा खर्च होगा, आपका पैसा खर्च हो जाएगा रिलीजन को प्रोपेगेट करने में. What is the second best idea? The second best idea is the people who are going for trading, उन्हीं के ships पे बैठ जाओ आप भी. Are you getting this thing? The people who are going for doing trade, like उन्हीं का ही infrastructure use किया जाए. The same infrastructure must be used. The same infrastructure must be used and आपका अपना रिलीजन का प्रोपेगेशन भी होगा एंड एज वेल एज आपकी ट्रेडिंग भी हो जाएगी. दोनों ही काम हो जाएंगे, है ना, दोनों ही काम हो जाएंगे. सबना अर्लियर कैपिटल वाज जोधपुर, नहीं सबना नॉट जोधपुर, अर्लियर कैपिटल वाज, देयर इज अ प्लेस इन राजस्थान कॉल्ड एज जालोर. अगर आपको पता हो डिस्ट्रिक्ट है जालोर, तो जालोर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह थी भीनमाल. भीनमाल इन जालोर डिस्ट्रिक्ट वाज देयर फर्स्ट कैपिटल. ठीक है, जालोर डिस्ट्रिक्ट है एक. जालोर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का मैप देखना, जालोर डिस्ट्रिक्ट सिरोही के पास मिलेगा आपको. जालोर डिस्ट्रिक्ट समथिंग सदर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान में देखने की कोशिश करना. देयर विल फाइंड लाइक जालोर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में देखना. सो यू विल फाइंड जालोर देयर एंड जालोर में एक जगह है भीनमाल. ठीक है, ओके, यहां तक सबको क्लियर है? एनीवन हैविंग एनी डाउट? Okay, so regarding Mihir Bhoj, yes, Saiti. So, I have a doubt that why Arabs didn't invade Rashtrakutas. They also had trade relations, right? So why not Rashtrakutas? And why Pratiharas? नहीं, देखो ट्राई तो ऐसा नहीं है ट्राई करेंगे. लाइक सी द मैप, कहां पर आसानी से आया जाएगा मुझे बताओ जरा साहिती. ज्यादा इजी क्या है साहिती? You need to travel this much more. ये देखने में तो बहुत छोटा है, लेकिन जब हम सी जर्नी करेंगे तो हमें ऐसा नहीं लगेगा कि जो लैंड जब सबसे जल्दी आ जाए. एंड लाइक दिमाग पे तो यही होगा ना हमारे, फर्स्ट विल कैप्चर दिस प्लेस एंड देन वी कैन एंटर दिस, बिकॉज सी जर्नी इज नॉट एज इजी एज लैंड जर्नी. But trading was going on, right, with the Rashtrakutas. So trading why was not? going. ट्रेडिंग वाज बिल्कुल ट्रेडिंग वाज गोइंग ऑन. बट अब इनको क्या लग रहा है ना, देखो मैंने क्या बोला, सिंध वाज ऑलरेडी कैप्चर्ड. दिस इज सिंध, है ना, फर्स्ट सेकंड, है ना, फर्स्ट सेकंड. सो प्रोबेबली उन्होंने सोचा होगा कि अगर देखो ऐसा होगा कि एक एरिया यहाँ पे और एक एरिया यहाँ पे, देयर विल बी बफर जोन बिटवीन द टू. एक जोन होगा, दूसरा डिफरेंट जोन विल बी देयर बिटवीन द टू. तो उससे तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं फ्यूचर में, है ना. अगर इफ देयर आर सम ब्रदर्स एंड हु आर लिविंग कहीं पे बहुत दूर जाके, लाइक यूएस में कहीं पे रह रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे ट्राई टू लिव इन अ सिंगल लोकेलिटी. दोनों एक ही लोकेलिटी में रहना नहीं चाहेंगे, सही थी. दोनों ये चाहेंगे कि एक रहे विस्कॉन्सिन में और एक रहे टेक्सास में. ऐसा तो नहीं होगा ना. इस मैप से आपको क्लियर हो जाएगा. दिस इज सिंध, इफ यू कैन सी दिस पार्ट इज सिंध, है ना. सिंध वाज ऑलरेडी कॉन्कर्ड, सिंध ले चुके हैं. सिंध ले लिया है. गुजरात को ट्राई कर रहे हैं कि ठीक है एक बार पहले गुजरात भी लेते हैं, एक एक करके चलेंगे. we'll go like this. ओके, तो ये ले लिया है, इसके बाद ये लेंगे, तब थोड़ी लाइक दिक्कत आ सकती है. अगर हेल्प की जरूरत पड़ेगी, सो नाउ दैट विल बी ह्यूज एरिया, एक बड़ा एरिया हो जाएगा. विल बी पावर टू रेकन विद. ओके साहिती, Got it, sir. Thanks. Okay, so we'll continue this discussion tomorrow as well. राजा भोज से हम कल कंटिन्यू करेंगे. आफ्टर डूइंग दिस वी विल मूव ऑन टू पालास, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बुद्धिज्म के लिए. पालास, in fact, the last dynasty to patronize Buddhism. They were the last dynasty to patronize Buddhism, Palas. और उसके बाद वापस से हम चलेंगे साउथ में एंड we'll do Cholas. ठीक है, we'll be doing Cholas. So tomorrow we'll be completing Pratiharas, then Palas, and then we'll move on to Cholas. ठीक है, so साउथ में कवर करते हैं पहले, और उसके बाद फिर हम नॉर्थ में जाएंगे. उसके बाद we'll enter in the north. यहाँ पर दिल्ली सल्तनत वापस से शुरू करेंगे. यहाँ पर
इन्वेजन ऑफ इस्लाम से, फिर दिल्ली सल्तनत करेंगे, ठीक है, इस हिसाब से हम चलेंगे, ठीक है। I hope things are going fine, and if you are having any problem, any issue, you can like contact with me, or you can tell me in the class itself. Okay, bye bye, have a great day.